हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन। शेयर। हम टीम तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनेद। भाई साहब। पहले तो आपको बता रहे हैं गुड न्यूज आ चुकी है, इंडिया में अब गुड न्यूज आना स्टार्ट हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। मिठाई कब खिला रहे हो? कब यार तूने बताया नहीं यार। इंडिया की गुड कौन है मतलब इंडिया में गुड न्यूज आई है कि क्या मतलब भाई कुछ देर अर्सा पहले ना एक चल रहा था, वो प्रोजेक्ट चल रहा था बेंगलुरु टू मुंबई ना, वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना रहे थे वो। कौन सी है यार, ये तो हर आए रोज कोई ना कोई तो नहीं। फिर वो ना अब स्टार्ट हो गई है चलना और उसकी सारा कुछ वो दिखा रहे हैं आपको। अच्छा। सब टाइम टेबल के कब ये चलेगी, किधर से चलेगी। कोई कल ही वीडियो आई थी तो मैंने कहा पहले हम डील पे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कोई और। भाई मेरे ख्याल में वो जो नरेंद्र मोदी जी का विजन था ना कि वन नेशन वन ट्रेन, और वो जो जितनी भी ट्रेन है वंदे भारत में स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट क्या वो तकरीर को भी पहुंच रहा है भाई। बिल्कुल जी, मुंबई बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर। और अभी पिछले हफ्ते में वंदे भारत वो कार्गो वाली भी तो आई है ना, फ्रेट ट्रेन। बिल्कुल वो भी आई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना वो को जिनके इतने क्रेडिट पड़े हुए हैं, आपको जितने भी चाहिए आप इसमें से निकाल के ले सकते हैं। फ्री में मिलने वाले हजार क्रेडिट, जिसको चाहिए वो उठा ले इसमें से, साइन अप सिर्फ करके। और उसके बाद बेशक आप परचेज बाकी जो परचेज करने वाले हैं वो भी आपको वंदे भारत ही पहुंचाएगी आप तक। वो आएगी ना। चलो भाई चलते हैं आप वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। This video is about the rumors floating around the Bengaluru Mumbai Vande Bharat Express and what can be the best possible timetable for this train with current ये रोड के साइड पे infrastructure. वो ट्रैम वाली लुक नहीं दे Let's रही? look at the information which are confirmed when it comes to Vande Bharat sleeper train between Bengaluru and Mumbai. We will have two sleeper Vande Bharat Express between Bengaluru and Mumbai on two different routes. The first one will be via the shortest and the fastest route between the two cities. The route for this Vande Bharat is via Guntakal, Raichur, Kalburgi, Solapur and Pune. The second Vande Bharat will be via Tumkuru, Hubballi, Belagavi, Meerut and Pune. This second train will be initially run as a superfast train with LHP coaches and will be later converted to Vande Bharat Sleeper. Okay. This was the information shared by our ministers. But in reality, the train turned out to be a super slow train. 24 hours journey duration. I'm so disappointed with this train that I don't want to talk about this in this video further. अच्छा, स्टेशन पे ब्रेक देखो 3 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, बस इसके ज्यादा ब्रेक ही नहीं है स्टेशन पे भाई साहब। और हमारे तो 1 मिनट भी मुश्किल से नहीं खड़ी होती, उसके बावजूद लेट हो जाती है। क्यों पहुंचती यार वो रास्ते में। The information circulating online is that the latest rakes which has come out of BEML will be used for the new Vande Bharat sleeper between Bengaluru and Mumbai. One rake is 2026 made and the other one, the prototype rake, manufactured in 2024. The prototype rake was sent back for minor modification after RDSO trials. It has been completed now. Both the rakes are in and around Bengaluru. One at Bengaluru Cantonment and the other one at Vardapura. The new Vande Bharat will be departing Bengaluru by evening and reaching Mumbai the next day morning. Also, July 2026 was the tentative date for starting this train. The exact timings and average speed are yet to be revealed. We are already in August. The train is yet to start, but a good news has finally come. The rake has been commissioned according to news article in Deccan Herald by South Eastern Railway. The trial runs are expected to begin soon. Okay. Now we shall see what can be the realistic timetable for this train. 16 hours is the expected travel duration, but railways can actually reduce the time by further 90 minutes. Let me explain. First, Vande Bharat Sleeper between Bengaluru and Mumbai is happening on the fastest and shortest route. Now let me justify why this route is better for a dedicated faster connecting train between Bengaluru and Mumbai. Here are the speed limits for the route via Raichur. Bengaluru to Dharmavaram, which falls under South Eastern Railway, has a maximum speed limit of 130 km per hour at the moment. There is one guard section at Makli Durga where trains are restricted to run at max speed of 85 km per hour.
KSR Bengaluru to Rajanukunta is also ये रूट 110 at the moment. Now let's look at the fastest train on this section. 20704 Yeshwanthpur Kachiguda Vande Bharat covers the distance of 176 kilometers between Yeshwanthpur and Dharmavaram in 2 hours with an average speed of 88 kilometers per hour. This Vande Bharat has a stop at Indupur. There are 2 routes between Penukunda and Dharmavaram, and the Kachiguda Vande Bharat takes the shortest route. Okay. Dharmavaram to Wadi comes under New South Coast Railway and South Central Railway. Maximum section speed is 130 for the entire route via Gutti. If you look at the map, there are 2 routes between Kalluru and Guntakal. The route via Gutti is 130 feet, while the direct route to Guntakal is 110 km per hour feet. The route also has a lot of curves due to broad gauge following the previous meter gauge alignment. The distance is less via the direct route, and Bengaluru Rajdhani takes this route. I'm expecting the new sleeper Vande Bharat to take the same route. The fastest train on Dharmavaram to Wadi section is 12213 Yeshwanthpur Delhi Duronto Express, which takes 4 hours 30 minutes for 330 kilometers. The Duronto Express takes the Wadi bypass line, but we shall take the same time as the distance is almost similar. The Duronto has a stop at Guntakal. Wadi to Mumbai comes under Central Railway. Wadi to Pune is 130 feet. Pune to Lonavala has a maximum section speed of 110 km per hour. There is a guard section between Lonavala to Karjat where the maximum speed is 60 km per hour. As far as I know, the maximum speed between Karjat and Mumbai via Kalyan is still 105 km per hour. I need confirmation on this part from someone who knows the accurate speed limits on the Karjat-Mumbai line. The fastest train between Wadi and Mumbai is 12220 Secunderabad Lokmanya Tilak Duronto Express, which takes 9 hours 32 minutes for a distance of 585 kilometers. Now, if we add all the fastest time, the total duration comes to 16 hours and 2 minutes for a distance of 1087 kilometers. This gives an average speed of 68 kilometers per hour. Media, after interacting with railway officials, also indicate a 16 hours run. Personally, I would like the train to be much quicker. The reason I'm saying this is that 75% of the entire route has a speed limit of 130 km per hour and the entire route is doubled. Average speed of 67 is not that great. Personally, I feel the average speed for this train should be at least near 80 km per hour, which means the travel duration comes to around 13.5 hours. This is very much possible by Indian Railway standards. Just take Chennai-Nagarkoil Chennai Vande Bharat for example. The train has an average speed of 80 plus in both directions for a distance of 723 kilometers on 110 kilometers per hour fit double line section. There is one advantage the Chennai-Nagarkoil line has compared to Bengaluru-Mumbai line, less number of freight trains. With Vande Bharat being a premium train, this factor should not come into play is my personal opinion. Now, let's look at the fastest daytime Vande Bharat connections on this entire route. Bengaluru to Kalburgi Vande Bharat takes 8 hours for a distance of 560 kilometers with an average speed of 70. Kalburgi to Solapur there is no Vande Bharat and the fastest train schedule is 12164 Chennai-Mumbai LTT Express and 3 weekly trains which take 1 hour 25 minutes for a distance of 113 kilometers with an average speed of 80 kilometers per hour. The fastest Solapur-Mumbai connection is 22226 Vande Bharat Express, which takes 6 hours 30 minutes for a distance of 454 kilometers with an average speed of 70 kilometers per hour. On adding all the time duration, it comes out to be 15 hours 55 minutes, which is almost similar to our previous calculation. 16-hour duration is possible for the new Vande Bharat Sleeper. Personally, I would like to see stops only at Guntakal, Raichur, Kalburgi, Solapur and Pune. Since this train is being introduced as a faster Bengaluru-Mumbai train, I feel more stops are not needed. Guntakal and Solapur can be the crew change points and watering stops. The fastest time possible between Mumbai and Pune is 3 hours at the moment, and anything less than that may happen in future. The magic can happen only between Pune and Bengaluru. Pune to Bengaluru, more than 90% of route is 130 feet. Pune to Wadi, a distance of 412 kilometers should be covered in 5 hours.
average speed will come to be around 82 kilometers per hour. Vadi to Dharmavaram, a distance of 330 kilometers, should be covered in 4 hours. Again, average speed of 82 kilometers per hour. Dharmavaram to KSR Bengaluru, a distance of 181 kilometers, should be completed in 2 hours. Average speed of 90. This looks a bit tough, but it can be achieved. So the total duration comes out to be 14 hours. We can add a slack of 30 minutes for this train. So the fastest realistic time that a Vande Bharat sleeper train can achieve with the existing infrastructure is 14 hours 30 minutes for a distance of 1,115 kilometers with an average speed of 77 kilometers per hour. So here is the timetable I would love to see for Vande Bharat sleeper from both ends. ओके जी, ये थी हमारी आज की वीडियो भाई साहब। ये थे टाइम टेबल जो कि मुंबई से बेंगलुरु तक ट्रेन ने चलना था और उन्होंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। इस टाइम पे इधर पहुंचनी चाहिए और इस टाइम से इधर से निकलनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी चीज जो वो बता रहे थे वो ये है कि उसमें ना जो ट्रेन के ट्रैक्स है ना वो किस सिटी में कैसे हैं, किस सिटी में कैसे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस सिटी में जब ये स्टेशन चेंज करेगी उसकी स्पीड इतनी रहेगी और अगला स्टेशन जब चेंज करेगी उसकी स्पीड इतनी रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैप में उन्होंने बताया है कि भाई मुंबई से बेंगलोर जाने के कितने कितने रास्ते हैं और कौन सा रास्ता फास्टेस्ट हो सकता है, और जो फास्टेस्ट भी हो सकता है उसमें भी भाई वो 14.5 घंटे बोल रहे हैं कि लगेंगे। 14.5 घंटे मतलब कि बहुत बड़ा लंबा सफर है ना। यहाँ से ऐसे हिसाब लगा लो ना कि तुम लोग इस्लामाबाद से चले हो, तुम लोग ने कराची जाना है। कराची लेकिन फिर भी यार अगर देखा जाए तो जो अपनी ग्रीन लाइन है वो तो 24 घंटे का सफर 12 घंटों में ऑलमोस्ट कर देती है। 12 घंटे नहीं तो 13 घंटे में ऑलमोस्ट जो है ना वो सफर 13-14 घंटे में करती है। उसका ये है ना कि उसके जस्ट स्टॉप जो है वो 3 स्टॉप है, 3 से 4 स्टॉप है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम 140 to 150 मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। ग्रीन लाइन नहीं 140 नहीं 120 तक जाती है और उसको प्रायोरिटी दी जाती है। 120 के लिहाज से वो कहते हैं 12 घंटा सफर करेगी 24 घंटे का खुद हिसाब। यार 24 घंटे का सफर ही नहीं होगा ये ऐसे कैसे नहीं है 12 घंटे। ये तुम मिड में हो, इधर अगर तुम्हें इस्लामाबाद जाना है तो 12 घंटे इधर लगा लो, अगर कराची जाना है तो 8-9 घंटे उधर लगा लो। 8-9 नहीं तकरीबन 10 घंटे पक्के। 10 घंटे पक्के है तो 1 घंटा फिर भी एक्स्ट्रा ऊपर लगा लो, 11 घंटे तो फिर भी बन गया यार। वो एक ही बात होगी, मतलब 24 घंटे का ही सफर हो गया कराची से। 24 घंटे का ही सफर करती होगी यार। ये किलोमीटर के हिसाब से अगर देखा जाएगा इधर से कराची मेरे ख्याल 800 किलोमीटर है। ऐसे ही है 800 किलोमीटर और 1800 किलोमीटर सफर है। वही हिसाब लगा। नहीं ऐसे उनकी ट्रेन की स्पीड है 180 वो कर यार वो नहीं ना, वो दरमियान में घाट आ जाती है उधर उसकी स्पीड हो जाती है 50 से 60 किलोमीटर। बिल्कुल ऐसे ही। और बेंगलोर से लेके मुंबई तक के जो ट्रैक्स है ना वो भी इतनी हाई स्पीड नहीं है। उन्होंने बोला कि 80 से 70 की स्पीड लिमिट है और फास्टेस्ट ट्रेन के लिए ये है। तो फिर हिसाब लगाओ कि बाकी ट्रेनों का क्या हिसाब। बाकी तो वैसे चलती वैसे हैं। हाँ तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको अच्छी लगी और मुंबई टू बेंगलोर वाले जो भी सफर करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब, उस पे सफर करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ। और जरूर बताइएगा जिसने सफर करना है या किया है या करने का सोच रहे हैं, ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।